देखने आते हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इस एंड पे उनको मैनेज करते हैं। तो सबके लिए ये अलाइनमेंट होना बड़ा ज़रूरी थी, ताकि जो एक ह्यूमन एरर है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। सो आई थिंक अगर कोई आपका इस बारे में कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। प्लेयर्स को कमेटी ने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया है और आई थिंक उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और उनकी काफ़ी तसल्ली हुई है, बिकॉज उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी। तो उससे पहले आई वुड लाइक माइक टू से अबाउट दिस डॉक्यूमेंट एंड देन डॉक्टर साहब एंड देन वी कैन टेक द क्वेश्चंस। Firstly, the first thing we realised was that the cricket landscape has certainly changed, and every single test nation in the world is struggling to come up with a method or a document that caters for test cricket and the challenges around that. The fact that they want to value it, but how do you value it from a financial point of view, where you allow players to focus on test cricket, and also where the franchise game in T20 sits. And every single nation around the world has really struggled to come up with a model that actually can cater for the different formats of the game. So I think the PCB have come up with a format or a framework that caters for everything. And it's an impressive document, one that, as I said, gives Test cricket not only a piecemeal in terms of we care about Test cricket. This actually shows that the PCB does, and it's allowing players to focus solely on that, playing a lot of first-class cricket and preparing better for Test cricket. And it's also catering for the T20 player who could benefit from going around the world, basically learning their craft, playing different tournaments, and also be remunerated. And therefore the PCB doesn't have to pay them as much as they can achieve financial support in other ways. So it caters for everything, and obviously players that are involved in both Test cricket, one-day cricket, it caters for them. So it's an incredibly good document. It's one that, as I said, I think is the envy of most countries that are trying to find a formula. And I think that in years to come it'll be a document that the PCB will be very proud of. डॉक्टर मुगल जो हमारे मेडिकल साइड को हेड कर रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है और लड़कों पे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे भी बहुत मेहनत की है। तो ब्रीफली डॉक्टर साहब प्लीज़। Assalamu alaikum everybody. So sports medicine has changed quite markedly throughout the world, and for us to be able to perform and compete at the highest level, we need to make sure that our players are fit to perform. And so on that sense, fitness has become a non-negotiable. So over the last 4 or 5 months, we've evaluated, looked at the setup that we have in Pakistan, and from that we've developed a robust, a reliable, and a repeatable testing and screening battery, which we have started to apply to all the players. The screening battery that we have at the moment is 24 tests that they have to undergo, and it covers all the joints of the body. It covers their fitness, it covers their agility, it covers their strength, their mobility and their balance. But also we aim to do all their cardiac screening, hearing screening, visual screening, and then we're looking at all the other performance markers as well. So once we get this into place, when we test our players, we'll get a baseline of where they are. And this is not to pass or fail them at the moment, is to find out where they are and how we can help them improve and take them forward in terms of performing. The test batteries will be done every 4 months, so we understand where our players currently sit and then where they are in 4 months' time, and they need to be showing that they're improving. And once they're improving, we can then develop them further. If they're not improving, we need to know why. The test batteries will be carried out every 4 months, so at 4 months and at 8 months. And again, hopefully by the end of the test batteries, towards the end of next year, we'll have players who are certainly competing within other countries, and we'll have our performer whereby they're in the excellent or elite category.
So I'll be available to answer any questions later on, but that's the gist of it at the moment. आज माशाल्लाह एक माशाल्लाह एक मेला सा लग गया है। क्या आज आकिब साहब ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो अहम है, तो क्या आप समझते हैं कि आपको किसी ने ट्रैप किया, नहीं बताया ये बात कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट अहम है, हमें जो T20 खिलाड़ी हैं इनको स्टार खिलाड़ियों की तरफ नहीं बनाना चाहिए, पहले टेस्ट क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। दूसरा सवाल ये है आपसे कि जो चीज़ें आपने बताई हैं कि ये होगा वो होगा, हम इनका मेडिकल टेस्ट लेंगे, भाई ये तो गुज़श्ता 70 सालों से हो रहा है सब चीज़ें। अगर आप परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट की परफॉर्मेंस बेस पे खिलाड़ी मुंतखब करेंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? पहली बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत सारा काम है करने को। सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत सारा है काम करने को, और मेरा ख़्याल है ये अगर 70 सालों से हो रहा है तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस तरह डेटा बेस्ड चीज़ हो रही थी। डेफिनेटली सिलेक्टर्स बैठते थे और फैसला करते थे। स्टेटमेंट देना और कहना कि मुझे टेस्ट टीम प्लेयर्स को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, हर प्लेयर को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, स्टेटमेंट्स की हद तक तो बड़ा अच्छा हर बंदा कह देता है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म पे जाके और उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे बताएं पिछले 5 साल में कितने लोग टेस्ट जाके खेल रहे थे, और अगर नहीं खेल रहे थे तो क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। जिसकी मर्ज़ी है खेले, जिसकी मर्ज़ी है ना खेले। तो अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसको पाबंद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। अप्रिशिएट ना करें, एक्नॉलेज ज़रूर करें कि कम से कम ये ज़रूर शुरू होएगा कि अगर अब नहीं कोई खेलेगा तो आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। जो प्लेयर्स लगेगा कि वो अपने लिए खेल रहे हैं उनके लिए हम क्राइटेरिया बनाएंगे, तो क्या ये जो आज क्राइटेरिया बना है उन्हीं की बुनियाद पर उन प्लेयर्स का फैसला होगा? और सेकेंडली मेरा मतलब मुझे शायद मैं गलत हूँ, मुझे यूँ लगता है कि ये जितना सिस्टम है ये जैसे AI बेस्ड हम जाना चाह रहे हैं। AI बेस्ड नहीं है, डाटा ड्रिवन है। अच्छा, पहले वो प्लेयर्स के बता दें और फिर मैं मोगल साहब से एक छोटा सा सवाल करूँ। प्लेयर्स देखें, उसका अगर आप पढ़ेंगे ना डॉक्यूमेंट तो आपको उसमें हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा, जिसमें बड़ा क्लियरली है कि अगर आप स्कोर करते हैं, कब करते हैं, फील्डिंग आपकी कैसी है, आपका विकेट्स ले रहे हैं, तो उसमें एक एक चीज़ मेरे ख्याल में बहुत डिटेल में लिखी गई है, तो उससे आपको सारी चीज़ों का जवाब मिलता है। अच्छा, मेरा माय क्वेश्चन टू डॉक्टर मुगल, इन लास्ट 4 months how you feel the fitness level of Pakistani players, and so far what is the percentage level of your satisfaction about Pakistani players fitness? So I think it's unfair to judge people at the moment in terms of their fitness. We've had a look at where they are and carried out some capacity testing, and right now where they stand is it's not where we want them to be. They're quite low, but I think there's quite a few reasons for that, and I'll go into more details maybe later on. So, but what we want to do is we want to leave the past in the past. We want to start a new future now for Pakistan cricket. So what we're doing currently is we're looking at all their baseline markers, we're doing all their testing, and that will give us an indicator of where they are. We don't want to punish anybody, that's the wrong thing to do. What we want to do is we want to protect our players, and we want to increase their performance, and we want to improve their well-being. So once we have their baseline data, we will look at them, we will educate them, we will help them, and define where we are, and then hopefully we'll work with them. So in 4 months' time, when we do their testing again, they will be in a better position. Assalamualaikum Chairman Sahab. So sorry, just to talk about the impact score, which was raised before. The impact score is it's an international model. There are many models around that are well respected, and they obviously take into account the runs you score, when you score them, the impact you have in the outcome of the game,
the time you score them, your strike rate. There are many variables which are used with bat ball to come up with a figure. So not your traditional data, which is obsolete in many ways. It's outdated in terms of how players are judged. So we're interested in players that win games for Pakistan and make contributions to do that. If you bat at number 7, you're clearly not going to score as many runs as the guy who bats at number 3. But you can just have just as much of an impact on the outcome of the game. And those are the things that we judge, and those are the things that we value. And those are the things that are not subjective. They are objective numbers that are judged by a formula and is very much world known in terms of the formulas that those are used. मोहसिन सर, पीसीबी में एक प्रैक्टिस होती थी कि जब ये फिजिकल ट्रायल लिए जाते थे, फिटनेस ट्रायल लिए जाते थे प्लेयर्स के, तो मीडिया इनवाइटेड होता था, मीडिया के सामने ये होते थे, मीडिया को पता होता था कि इसने कितने क्या क्राइटेरिया है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे बड़ा अच्छा होता था कि लड़के भी बड़े अलर्ट होकर आते थे इस चीज़ के लिए। तो ये काफ़ी अरसे से इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। तो आप ये नहीं समझते कि अगर मीडिया इन्वाइटेड हो तो इस फिजिकल जो फिटनेस ट्रायल इसका नतीजा ज़्यादा अच्छा होगा? डॉक्टर साहब, इट्स योर कॉल। I will support. So I think in terms of what we are doing in terms of testing, I think that's a data protection issue. So we want to try to keep our players protected and safe and secure in the fact that they're working towards improving their capacities in everything. So I think to have the media there would be wrong, but certainly we can give you indicators of where we are and how we're improving, and I'm quite happy to talk to you about that openly. मेरा सवाल आकिब जो है साहब, आकिब साहब आपसे मेरा सवाल है, फिर मैंने चेयरमैन साहब से भी एक सवाल करना है कि लाहौर कलंदर के साथ तकरीबन आप 7-8 साल रहे और तमाम प्लेयर्स को जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है। जो अभी डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट में 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बेसिक क्रिकेट है, जिसमें फिटनेस सबसे पहले है। आप 2-2.5 साल से हैं, क्या 2-2.5 साल से फिटनेस क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था? फिर आपने अपनी पहली पॉलिसी में ए ग्रेड ख़त्म कर दिया और बी से आपने कैटेगरी देनी शुरू की। अब आपने और एक फार्मूला ले हैं। आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट ठीक कर लें। आपको इसका क्रेडिट जाता है। अगर अब भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो क्या आप उन जिम्मेदारान को पूछेंगे कि यार आपको इतनी पॉलिसीज इतना टाइम दे दिया और क्रिकेट ठीक नहीं हो रही? थैंक यू। तो आपका ये सवाल है कि कितनी देर में हो जाएगी। देखिए, जो क्रिकेट है उसमें अब 3 तरह की क्रिकेट है। एक आपकी टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, और इसको ठीक करने के लिए कोई टाइमलाइन, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग तो बन नहीं रही, क्योंकि आप भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसी तरह से compete कर रही है। हमारा जो बेंचमार्क है वो आपके ठीक होने चाहिए। आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जीतने चाहिए, जो सबके लिए ज़रूरी है कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन वो एक सिर्फ वही मकसद नहीं होता। उसके अलावा आपकी जो सारी टेस्ट क्रिकेट है, आपकी जो सीरीज़ होती हैं, उनमें आपकी रैंकिंग है। रैंकिंग इसीलिए होती है कि यू नीड टू विन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। सो आई थिंक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेड बॉल है उसमें हमें टेस्ट मैचेस में पिछला सीज़न जो 2 साल था उसमें प्रॉब्लम्स आई, और उसी को हम ड्रेस करने की कोशिश हम करेंगे। और टाइमलाइन इसका क्रिकेट का बताना बड़ा मुश्किल है, इसको कि कोई आप टाइमलाइन कोई आपको दे दे कि 6 महीने बाद पाकिस्तानी टीम दोबारा कभी नहीं हारेगी, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिकेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव। आपका सवाल जो मेरे से है, बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसका
बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट निकालना हमारा सबका फ़र्ज़ है। डेफिनेटली टीम को जो जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जो चीज़ें कमी है वो हम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो हमारे बायलैटरल्स और वो हैं उसमें तो फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी काफ़ी तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस है, लेकिन जब टूर्नामेंट आता है तो उसमें हम कोलैप्स करते हैं और उसके कोलैप्स करने की काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, जिसको माइक भी एड्रेस कर रहा है, ये लोग भी एड्रेस कर रहे हैं। आप अगर देखें पिछले दिनों में जब टूर्नामेंट हुआ तो पीछे इतना अच्छा खेलते आ रहे थे, जैसे ही टूर्नामेंट में गए कोलैप्स कर गए और उसकी वजह मेरे ख़्याल में जो हमने फ़िगर आउट की है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ और है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो बायलैटरल्स हैं, अगर आप उसका सारा डाटा निकालेंगे हमारे टाइम का तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, टूर्नामेंट्स के ऊपर अब हमें फ़ोकस करना है, उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपका प्रेशर लेने का और आपका मेंटली उस टाइम कैसे ग्राउंड के अंदर जाते हैं वो बहुत मैटर करता है और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें एडमिट करना चाहिए और उसको फिक्स करना चाहिए और वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर होपफुली मुझे उम्मीद है जब हम अगले टूर्नामेंट में इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए हम जाएंगे। तो वहाँ तक आपने जो पहली बात की, हमारी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है और हमें हर वो चीज़ करना मुमकिन है, वो हमें करेंगे, चाहे मेरे से रिलेटेड है मैं करूँगा, चाहे टीम से रिलेटेड है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अच्छा मोहसिन साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में, तजर्बात किए जाते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम भी हो जाते हैं, फिर नहीं ट्राई आउट किया जाता है कुछ और। तो अभी सरफराज का मुस्तकबिल क्या है? यूनुस खां को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? हफीज़ को किस ओहदे पर फायज किया जा रहा है? क्या आपने नई प्लानिंग कर रखी है? मुख्तलिफ अखबारात में, मीडिया में ये बातें ज़ेर गर्दिश अब हैं। कई चीज़ें मैं जैसे 3-4 दिन पहले हेडलाइन चल रही थी कि जी यूनुस खान जो हैं वो टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर, मेंटोर, हेड कोच जो भी हैं। अब ये बातें तो मुझे चैनल से पता चलती हैं, जबकि हमारे पास तो उस तरह का ना कोई एजेंडा था ना कोई चीज़ थी। अब मैं उस पर क्या कह सकता हूँ? अगर कोई ख़बर उस दिन ना मिल रही हो और उस दिन वो कह के चलो सुबह आज ये खबर बना के चला देते हैं तो उस पर मेरा कसूर तो नहीं है। और जहाँ तक रही बात के हफीज़ की, बिल्कुल उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि हम किस किस जगह पे कहाँ कहाँ जो हमारी अभी वैकेंसीज़ खाली थी वहाँ के लिए बात कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगा जब ये खबर चल गई कि जी वो हेड कोच मुकर्रर हो गए और ये हो गया और सरफराज एक तरफ काम कर रहा है और दूसरी तरफ टीवी पे खबर चल रही है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह ताला उनको जो जो भी इस टाइम क्रिकेट के लिए बेहतरी कर सकता है, मैं हर एक के पास जाऊंगा भी, उसको इन्वॉल्व भी करूंगा और उसको साथ लेके भी आऊँगा इंशाल्लाह ताला। सारे लोग राब्ते में, पुराने सारे लोग राब्ते में, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे है, वो ये है कि आप किस तरह से इस चीज़ का कोई फार्मूला तैयार किया है या जो भी कोई है कि आप किस तरह से इस चीज़ को एवेलुएट करेंगे कि कौन अपने लिए खेल रहा है इंडिविजुअली और कौन टीम के लिए खेल रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको मौका मिला भी है, लेकिन कुछ इस तरह से हैं जो कि सेलेक्ट होते हैं स्क्वाड में लेकिन उनको खिलाए बगैर टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो उनके लिए क्या? देखिए, जो फार्मूला अभी माइक ने भी बताया कि अगर आप भी जाएंगे ना, इवन क्रिक इन्फो ने भी एक शुरू कर दिया हुआ है अपने, कि इम्पैक्ट प्लेयर आपने सुना होगा टीवी के ऊपर। तो इम्पैक्ट का मतलब यही होता है कि जैसे अभी माइक भी बता रहा था आपको कि 50 करना या 100 रन करना या 70 रन करना, ये सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन नहीं होती मैच जीतने में। एट टाइम्स आपका 7 नंबर पे आके एक प्लेयर 20 रन्स ऐसे करता है जिससे गेम चेंज होती है, या आपकी 5 विकेटें लेने वाला प्लेयर ही ऑलवेज़ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता। इम्पैक्ट मींस जो परफॉर्मेंस टीम को जिताने के लिए हो, वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कहीं भी हो सकती है। और दूसरा आपने ये कहा कि कुछ प्लेयर्स आते हैं उनको ट्राई नहीं करते और वो निकल जाते। ये निकल कहाँ जाते हैं? क्योंकि आपकी सीरीज़ वाइज प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं और जो प्लेयर्स नहीं फिट इन होते उस सीरीज़ के अंदर
इट डजंट मीन्स कि उनको हमने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, नेक्स्ट सीरीज़ में वो आ जाएंगे। उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा कि जब वो 15 प्लेयर जाते हैं तो फिर वो हेड कोच और कैप्टन का काम है कि उन्होंने किस तरह खिलाना है, उसमें फिर सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं आ जाता, वो हेड कोच और कैप्टन डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। चेयरमैन पीसीबी mohsin नकवी की पीसीबी हुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीसीबी हर ट्रैक के मुआहिदों की तादाद को अवामी तौर पर जाहिर नहीं करेगा, अब खिलाड़ी का मुवाजना सिर्फ उसके अपने ट्रैक के खिलाड़ियों से होगा। T20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज क्रिकेट के माहिरीन के लिए ट्रैक डी तैयार, ट्रैक BC वनडे और T20 इंटरनेशनल के माहिर खिलाड़ियों के लिए मुख्तस। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की मोतरफ़ है और हम इसके लिए इंशाअल्लाह यौम तशक्कुर भी मनाएंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे जिसने अल्लाह ताला को इज़्ज़त अता फ़रमाई। अब मैं दूसरे मसले की तरफ आता हूँ। हमारे ऑनरेबल मेंबर जनाब सरदार फ़तेहुल्लाह ख़ान, जिनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है, इन्होंने आज अपनी बजट तकरीर के दौरान कुछ ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ DI ख़ान से था उन पर बड़ी तफसील से बात की और उसके हवाले से इनके बड़े कंसर्न्स थे जो कि हम समझते हैं कि बिल्कुल जायज़ हैं। उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया।